सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि जो मैं क्योंकि बिकॉज यू टू कीप राइटिंग इट ऑल्सो ना, वट एवर यू कीप calculating stepwise. So you have to Yes. keep get into the habit of writing on the paper also in the same manner. So that question is okay. Now let's come to so basically uh, there'll be another small variation in the numericals. What will happen is uh, HOT plus charted depth or chart datum is equal to total depth. Similarly, draft plus UKC is also equal to total depth. So, in a question, HOT plus CD is equal to draft plus UKC. So, I could give you a question in which I give you draft, I give you chart datum, height of tide I will ask you to calculate, and I will ask you for UKC. It's possible. Is it okay? So, between the four variables, I can give you in a question any two variables. Third, you will find, and therefore the fourth will be asked in any combination. इसमें से कोई भी combination मैं बना सकता हूँ. I can give you charted depth and UKC, and I can ask you draft, or I can give you draft and UKC, and I can ask you charted depth. Is this okay? सर उसमें हाइट ऑफ टाइड भी देख के कर सकते हैं क्या? पूरा उल्टा हो जाएगा तो हाइट ऑफ टाइड तो आप कैलकुलेट करोगे ना. ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा ना सर कि वो हाइट ऑफ टाइड दे के इन दोनों को चीज को पूछे. हाइट ऑफ टाइड तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. चार वेरिएबल है, चार में से दो दे देगा, तीसरा वेरिएबल आप निकालोगे और चौथा पूछेगा. तो इसका मतलब हर क्वेश्चन में हाइट ऑफ टाइड निकाल के तीसरा जो पूछेगा उसको निकालना है उसको. करेक्ट, दैट्स राइट. So you can use in any combination that you want. सर मतलब HOT plus CD is equal to draft plus UKC. Absolutely right. मतलब ये चारों अब कैसे भी इसको बैलेंस कर लें. अब इसको बैलेंस कर लो किसी भी तरीके से. Two things will be given in the question. Third thing you will find out. करेक्ट सर. तो एक चीज आ जाएगी, एक्स आ जाएगी. And fourth thing will be asked. ओके सर. Okay. Okay. All right. Now let's write down another question. Find the HOT. Find the HOT at Bhavnagar on 9th February 1992 at 1200 hours. On 9th February 1992
at 1200 hours. Okay, this question of flushing which I had given you, how much time did you all take to do this question? सर आधे घंटे के आसपास तो आराम से लगा है सर। अराउंड 30 मिनट्स में हो गया। Okay, all right, ठीक है. So अब ये 30 minutes को हमें control to bring it down to 20 now. That's what the target is basically. So first time 30 लगता है, and so that's okay. एक बार से स्टेप याद हो जाएगा फिर वो टाइम कम हो जाएगा. Yeah, so now once with practice, this 30 will become 20 now. That's our target. That's the first step. Okay, that's going to be our first. अगर और ज्यादा लगे सर तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। So अभी हाँ, but अभी that's where the practice comes in now. So that will happen. That's okay. Now this is another set of questions which with another degree of difficulty. Bhavnagar on 9th February 1992 at 1200 hours. Okay. Now Bhavnagar will come in which volume? वॉल्यूम 2 में आएगा सर। वॉल्यूम 2 सर, इंडियन ओशन. Okay. So Indian Ocean. So open up Bhavnagar now. ATT number क्या आता है भावनगर का? 4346 4346 सर, 4346 4346 आ गया. All right. अब चलो 4346 पे. So 4346. So I am on page number 428. So मेरा Z0 के कॉलम में आ गया W. यस सर. 140 एक मिनट सर, ये W सर. यस W. यस सर. Everybody's got W? yes sir oh yes sir Okay. Now go downward and read W. It says, सर owing to large fortnight variation, टेबल 6 देखना है. see table 6. Okay. So now we enter into table 6. अब table 6 पे जाओ. Beginning of volume 2. यस सर, टेबल 6. सबको मिल गया टेबल 6? Yes, sir. यस सर. ओके. अब टेबल 6 का टाइटल है फोर्टनाइटली शैलो वाटर करेक्शंस. ठीक है. सो इट सेज investigations have shown that at certain ports with large shallow water effects, the tidal constituent with a period of one cycle per fortnight can be significant. The normal time and height difference allow for this effect, but at certain ports, predictions obtained by the use of SHM can be improved by a simple additional adjustment. Corrected values of mean level are given below for the ports concerned for the day of the spring and for each day before or after spring. The day of the spring occurs X days after new and full moon. The day of the spring occurs X days after new and full moon. Okay. अब मैं जाता हूं 4346 पे भावनगर. X की क्या वैल्यू है? एक्स की वैल्यू 2 है. 2 है सर. X की वैल्यू 2 है. मतलब I read the top line again. The day of the spring will occur 2 days after new and full moon. Okay. अब मुझे न्यू एंड फुल मून चाहिए भावनगर का. So I go into भावनगर page, standard port. वैल्यू से कहां से? हाँ जी.
एक्स की वैल्यू कहाँ से आई है? एक्स की वैल्यू में टेबल 6 में जाओ, फर्स्ट कॉलम, मिला? हाँ सर, हाँ सर, ठीक। So 4 3 4 6 के बाद फर्स्ट कॉलम x 2. Now go to Bhavnagar. I am on page number 150. Okay. Now my month is February. So February में मेरा न्यू मून कब है? थर्ड ऑफ फरवरी को थर्ड को मेरा न्यू मून है, वो एक सर्कल विद डॉट नजर आ गया, 2352 Yes, sir. तो थर्ड ऑफ फरवरी को मेरा न्यू मून है। फिर मैं आगे चलता हूं, थर्ड फरवरी के आगे, फिर मेरा 18 फरवरी को फुल मून है। यस यस सर। सर Okay. पेज नंबर बता सकते हो प्लीज? यस सर। आई एम ऑन भावनगर, पेज नंबर 150, 150. गॉट इट सर, 150. I am on February and I am looking at 3rd February. ठीक है, my date in question is 9th of February. My date in question is 9th of February. I am looking at new moon happening on 3rd of February. And I'm reading the line of table 6. The day of the spring will occur 2 days after new moon. The day of the spring will occur 6. थर्ड को अगर मेरा न्यू मून है तो 5 तारीख को मेरा स्प्रिंग अकर करेगा। एग्रीड? यस सर। अगर थर्ड को मेरा न्यू मून है, माय स्प्रिंग विल अकर ऑन 5th of February. My date in question is 9th of February. How many days before 9th am I? How many days after spring am I? Sorry. 4 days. 3 days. 4 days. आफ्टर स्प्रिंग इज 4 days सर, 4. After spring is 4 days. 4 days. Because spring मेरा 5 तारीख को हो रहा है, राइट? मेरी डेट 9 तारीख की है, तो आई एम 4 days after spring. Yes, sir. यस सर। Okay, I go back to table 6 again. Days before or after spring. So go to 4. Go to the column of 4. What is the reading? 6.04. 6.04. This is my value of Z0. ये मेरा Z0 है। सर इसमें टाइम का भी कुछ है, टाइम भी देखेंगे, जैसे 2352 है और जो टाइम डिफरेंस है उसके हिसाब से भी डेज एडजस्ट हो सकते हैं सर? नहीं, कुछ नहीं, nothing. अच्छा बस यही है। ठीक है सर। The day of- 4 डे वाला एक बार दोबारा बता देंगे, पूरा वीडियो हैंग हो गया था। So my new moon is on 3rd of February. My spring will occur X days after new and full moon. So my spring will occur on 5th of February. Right. My date in question is 9th of February. How many days after spring am I? 4. 4. So 4 के कॉलम में जाओगे और 4346 की रीडिंग पिकअप कर लोगे। This will be 6.04. Sir, अब ये ठीक है 6. सर।
और ये करेक्टेड वैल्यू होगी क्या? नॉट करेक्टेड मतलब This is my Z0 value. Z0 without seasonal correction. This is Z0 value. That is my line number 4. 4. This is my line number 4. Baki, the rest of the question will follow the normal way. तो 6.04 कहाँ पे? तो टेबल 6 पे जाओ. यस सर. कॉलम ऊपर में लिखे हुए हैं डेज बिफोर और आफ्टर स्प्रिंग. यस सर. उसमें 4 के कॉलम में जाओ. ओके सर. And go to 4346. You will come to Okay, sir. 6.04. Oh, got it. Thank you. ठीक है. All right. बाकी the rest of the question will remain the same. No difference. सर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग अलग क्यों है? क्योंकि भावनगर एक ऐसा ये कुछ पोर्ट्स ऐसे हैं जहां पे जो टाइडल वेरिएशंस इतनी ज्यादा हैं, तो वहां पे शैलो वाटर इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है. तो इसके लिए एक एडिशनल करेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है. इसलिए इन पोर्ट्स पे होता है. तो जिस पोर्ट पे W आ जाएगा जनरली भावनगर ही है, तो उसके वो भावनगर वाला, उसमें ये करेक्शन लगानी पड़ती है. इसके क्वेश्चंस आपके तो काफी सीधा अप्लाइड करेक्शंस दे रखी हैं सर, बस हमें वैल्यू उठानी है सही से देख आपने के. बस वैल्यू सही देख के उठानी है आपने. सर ये जो लिखा है कि स्प्रिंग अकर्स आफ्टर न्यू एंड फुल मून डेज. अभी मैं इसकी सर, अगर ये वेरिएशंस जो, करूंगा. अभी मैं इसकी सारी वेरिएशंस करूंगा. ओके सर. अभी आई एम जस्ट गोइंग टू डू ऑल द वेरिएशंस. सो ये मेरी फर्स्ट वेरिएशन हो गई. ठीक है. सर वो स्टार्टिंग में व्हेन वी गो टू टेबल 6 जो पेज नंबर 348 में क्या था सर वो, लाइक हाउ डू वी रेफर टेबल 6? गो टू टेबल 6. नो सर, बिफोर दैट लाइक व्हाई डू वी गो ऑन टेबल 6 सर? कहीं पे लिखा था ना रेफर टेबल. W. So you go to 4346 in part 3. Go to part 3. Yes sir. Z0 के कॉलम में you will find some alphabet there. Have you found W? Got it. So Z0 में W लिखा हुआ है. That's why we are going to section 6. Correct. What's the page number sir? Page number? Page number. किसके वाला? 428 है. 428. Page number. सर टॉप पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है. 428. सर ये भावनगर के लिए तो न्यू मून और फुल मून का पेज था, टाइटल पेज. तो उन्हीं पोर्ट्स के लिए आएगा ना सर जिनका टाइटल पेज? उन्हीं पोर्ट्स के लिए. उन्हीं पोर्ट्स के लिए आएगा. ओके. अब दिस इज वेरिएशन नंबर 1. वेरिएशन नंबर 2. Supposing I give you find the HOT at Bhavnagar. Find the HOT at Bhavnagar on 5th of February. On 5th of February. तो कैसे ढूंढोगे? सर तो एड स्प्रिंग्स ले लेंगे ना उसको, जो थर्ड कॉलम दिया हुआ है टेबल 6 में. बिल्कुल. एड स्प्रिंग्स. तो रीडिंग विल बी हाउ मच? 6.19. Correct. 6 है. Is that okay with everyone? Yes sir. Yes sir. So कितना जो नंबर 5 वाला उठाना है ना सर इसमें? सर
ऑन फिफ्थ बोला आपने, तो मतलब 4 दिन है सर। डेट बोली है आपने 5th। ओके ओके। तो मैंने बोला 5th of February. So 5th of February का रीडिंग आएगा at spring 6.19. ठीक है Because ठीक है सर, वी spring गॉट is इट सर। because the spring will occur 2 days after new moon. Is that okay? यस Is सर। that तो इसका fine? 6.14 नहीं है सर? 6.14 है, एक मिनट, नहीं at तो spring देखो, 7th का हो जाएगा ना, 6.14 तो 7th के लिए हो जाएगा। तो ये हम अभी हम थर्ड को है, अभी हम 5 फरवरी की भावनगर में बात कर रहे स्प्रिंग तो 5th। हैं, अभी हम 5 फरवरी की बात कर रहे हैं। तो at spring because spring is on 5th of February. यस Is सर। that okay? Is that यस okay? सर। Okay. यस सर। Supposing I give you in the question, find the height of tide on 4th of February. स्प्रिंग एक दिन बाद होगा सर। 1 day before तो spring. ये one day before spring हो गया। 6.18 होगा। यस सर। 618। तो 6.18. 6.18. is this Yes. okay with everyone? Sir, in that case, 3rd Feb 614 नहीं होगा? 4th February ये हो गया। नहीं सर, ये 3rd फेब जो लिखा है ना आपने ऊपर, सर वो 6.14 होगा ना। ओके, एक 3rd फेब ये मैंने गलत लिख दिया क्या? ये मैंने गलत कर जो दिया, 9th है, 9th। ये 9th है, सॉरी, आई स्टार्टेड विद 9th, गलत कर दिया मैंने, ये 9th February, आई स्टार्टेड विद 9th February. Is this okay? Yes, sir. यस सर। Supposing I give you 3rd February. स्प्रिंग्स के 2 दिन पहले सर। 6.14। तो अभी 6.14 आ जाएगा सर, 2 दिन पहले। is this okay with मतलब सर everyone? पहले हो चाहे बाद में हो, जो डेज की वैल्यू है Absolutely वहीं right. से उठाना है, चाहे पहले हो चाहे बाद में। ओके Because सर। the title of the column, if you read, is days before or after spring. ठीक है सर, ठीक है, ओके। ठीक है, is this okay? तो ये इसमें लिखा हुआ ये एवरेज एमएल, इसका क्या मतलब है? अभी इसका रुक कोई जाओ, है अभी रुक यूज? जाओ, अभी पहले मुझे सारी वेरिएशंस करने दो पहले एक बार, अभी कोई और डेविएशन नहीं चाहता मैं, नहीं तो मेरी वेरिएशंस विल गो फॉर अ टॉस. So let me finish all variations first. All right. Supposing I give you 12th of February in the question. फाइव 5.95 आएगा ना 7 दिन बाद? So एक अब मिनट सर, इसका अब देखो, 5.95. 7 days after spring. my spring is going to happen on the 5th. मैं 12 की बातें कर रहा हूँ, यानी कि 7 days 7 days। after. तो 7 में जाऊंगा मैं, तो 7 की क्या रीडिंग है? 5.95 है। 5.95। 5.95 है। अच्छा, मतलब अगर उससे एक्सीड करता है सर तो अगले वाला न्यू फुल मून देखेंगे। अब मैं जा रहा हूँ on 13th of February. ओके, अब मैं 13th February को जा रहा हूँ. अब now your spring फुल मून will सर happen. यही रहेगा वैल्यू। 18th से 18th वाले से कंसीडर करेंगे। See, अब now your full moon is occurring on 6 आ 18th, जाएगी ना? 18. 18 Your spring will happen on 20th. और 16। No, your spring Sir, will 2 happen days after, 2 days after। X days after. 2 days after। तो सर 7 का लेंगे सर। ओनली So 18 plus 2, 20th is your spring. I am on 13th, 7 days before. सर 5.95 आएगा 7 days। सेम रहेगा सर। Is this understood by all?
That means the max interval that I can have from spring is 7 days, before or after, and then I go into the next Yes, cycle. sir. Is this okay with everyone? सर 13 फेब वाला बता दो एक बार. 13 फेब वाला बता दो. ओके, ऑलराइट. अब 13 फरवरी को मैं जा रहा हूं, तो अगर मैं 3 तारीख से लेता हूं, स्प्रिंग 5 तारीख को है, मेरी तारीख 13 है, यानी कि 8 डेज हो जाता है. यस सर. 8 डेज का मेरा कोई टेबल नहीं है. I don't have a table for 8 days. So how do I handle it? I will go into the next cycle. My full moon in the next cycle is happening on 18th. So my spring will happen on 2 days after full moon, new and full moon. So spring will happen on 20th. मेरी 13 है, 20. I am 7 days before spring. So 7 का कॉलम. सर ये जो कॉलम है नंबर 6 टेबल का जो कॉलम है सर, उसका कंक्लूजन यही है बस कि स्प्रिंग्स 2 डेज आफ्टर. और एक बार ध्यान से पढ़ने की जरूरत तो नहीं सर इसे फिर से टेबल को? दैट इज ओनली कंक्लूजन ना? अच्छे तरीके से. So basically the days of spring occurs X days, 2 days after new and full moon. After है, before नहीं है. And जो बाकी 1 to 7 कॉलम है, they are days before or after spring. बस यही कैच है. बस यही है सर इसका कंक्लूजन पैराग्राफ. That's the only ठीक है catch. सर. So long as you're able to Okay, control these two things, then you should be okay. Similarly, if I give you twentieth of February, जीरो डेज आ गया सर, फिर तो मतलब एट स्प्रिंग ही आ गया. so at spring, और 346 आ जाएगा, उस पे है 6.07. फिफ्थ को सर 6.19. 6.19 सॉरी 6.19. यस. so 20 फरवरी को 6.19, सेम टाइट. 5 फरवरी को जो आ रहा था वो 20 फरवरी को वही आएगा. यस सर. Is that okay? You'll be able to handle all these variations. कोई भी डेट दे दूं मैं? यस सर. Okay. Supposing I give you $14th of March. March. सर 5.96 है. 6. कितने दिन आ रहा है? 5.96. 6.04 नहीं आ रहा? 6 days sir, 596. 6 days before spring. 6 days before spring आ रहा है. यस सर 5.96. तो 18th को न्यू मून है, तो 18th को फुल मून है, 20th को स्प्रिंग हो जाएगा. तो 6 दिन पहले. -14. 5.96. Yes sir. So like this, basically,
you can control the value of W. बाकी rest of the question remains the same. बाकी सारा का सारा question. So having found this out, you can do this question at home. जो मैंने दिया है अभी ये 1200 hours वाला. You can practice this at home. पास्ट पेपर्स में इसके वेरिएशंस तो मिल ही जाएंगे सर ना? सारे वेरिएशन मिल जाएंगे. पहले ये सब ऐसे सब है. ये पास्ट पेपर का ही मैंने क्वेश्चन कराए हैं सारे, जो भी कराए हैं सारी वेरिएशंस जो करवाई हैं ये सारी ये पास्ट पेपर्स वाली ही हैं. This is the value of ZO, right? Nothing to be added, nothing. This is the value of ZO. This is your line number 4. बाकी you will follow the same sequence. This is Z0, line number 4. सर क्वेश्चन में और कोई ट्विस्ट तो नहीं होगा, बस यही है बस. ये ट्विस्ट है. This is the twist. ठीक है सर. तो एक और नंबर इसके अलावा एक और तो प्रैक्टिस हो जाएगी इससे क्वेश्चन. ठीक है, एक और दे देता हूं. पोर्ट बदल दो, दूसरा पोर्ट. ओके. तो फिर उसके लिए मुझे डिफरेंट क्वेश्चन पूरा नया बनाना पड़ेगा. I'll have to make a new question. सर ऐसे ही वैल्यू ले लो सर. आई थिंक कोई वैल्यू ले लो सर. वैल्यू ले लो तो कोई ऐसी 4354 या यस सर ऐसे ही ले लेता हूँ. तो फाइंड आउट ऑन 26th of January. सर कितना? 26 जनवरी. सर वो रिपीट करना सर क्वेश्चन अगेन. 26th जनवरी, 26 जनवरी भावनगर. So 6.00. So 5 days after I was. Yes, sir. 6.00, 5 days after. 5 days after. Is that okay? Yes. Yes, sir. Spring is happening on 21st of Jan. मैं 26 जनवरी पूछ रहा हूँ, तो 5 दिन बाद. अगर मैं 28 जनवरी पूछता आपसे, अगर मैं 28 जनवरी कितना सर कितना? अच्छा ठीक है सर. 28 जनवरी. तब 2 दिन और बढ़ जाते हैं. 5.9 5th March. सर क्या डेट दिया सर? 28 जनवरी. सर 5.95 वही 2 दिन और बढ़ जाते हैं ना सर. 5.97 2 दिन बढ़ जाते हैं सर. 7 days. 7 Yes, days sir. after spring. 7 days after spring. ठीक है ना? Yes sir. So 7 is the maximum. 7 is what I asked you basically. ठीक है सर. उसके बाद मार्च में जाना पड़ता सर हमको. तो अगर मैं 29th जनवरी बोलता आपको, तो अब आप मार्च में घुस जाते. फेब में ना सर, फेब में. सॉरी फेब में. सॉरी सर फेब 3rd फेब का लेते. यस यस 5th February. यस. मतलब नेक्स्ट मंथ में घुस जाते हैं सर सीधी सी बात. फिर नेक्स्ट मंथ में घुस जाओगे आप. यस सर. फिर नेक्स्ट मंथ में घुस जाते हो. So these are the various ways in which your variations can happen here. ओके, एक क्वेश्चन ले लो घर पे प्रैक्टिस के लिए. Find the HOT at
0000 hours, 0000 hours GMT on 20th February 1992. On 20th February 1992 at सर 28 मतलब सर 28 के 20 find the HOT 20 February ना? at 0000 hours GMT on 20th February 1992 at Port Adelaide, Outer Harbour. Sir, could you please spell it? Port Adelaide, Alpha Delta, Echo Lima, Alpha India, Delta Echo. Port Adelaide, Outer Harbour. You have to find the HOT at 0000 hours GMT on 20th February. At 20 Port फरवरी में 20 February. ठीक है. So try to, you know the catch in the question already. GMT को LMT में कन्वर्ट करके GMT को लोकल टाइम में कन्वर्ट करना है LT में. डेट तो सेम ही रहेगा सर इस जम से. बिल्कुल ठीक. सर एक चीज ये पूछनी थी सर, कल जैसे आपने क्वेश्चन में वो फ्लशिंग्स का यूके दे दिया था, व्हाई इज दैट? बिकॉज़ इट इज इन नेदरलैंड्स. ओ मैंने गलत बोल दिया. I spoke wrong. कोई बात नहीं सर, इट्स अ यूरोपियन पोर्ट, वी नो दैट. It's a European port. हाँ नहीं वो तो पता है सर, मतलब बस ये पूछना था कि ऐसा नहीं कि एमडी में लोग ऐसा तो नहीं करते कि बस ट्रिक करने के लिए दे दिया हो, क्योंकि वी नो दैट फ्लशिंग्स इज इन नेदरलैंड्स एक्चुअली. No. That is a mistake I made. You will be given ATT number also, and you will be given the volume also in the exam. ठीक है सर. नहीं वो पता था सर कि मतलब मुझे लगा कि शायद ऐसा ना हो कि ट्रिक करने के लिए वो लोग ऐसा दे देते हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Nothing of that sort. तो प्लीज जब ये क्वेश्चन करोगे अपने आप को टाइम करना एंड चेक योरसेल्फ कि कितना टाइम लग रहा है आपको. ठीक है. देन वी विल डिस्कस इट इन क्लास. सर क्वेश्चन ये है सर ना, फाइंड द HOT at 00 hours GMT on 28th Feb 92 at Adelaide Outer Harbour. 20th 20 फरवरी. ओके सर. ओके 20 फरवरी 20th 20 तारीख को on 20 February at Port Adelaide Outer Harbour. बस ये क्वेश्चन है. ओके सर. ठीक है. So now
A little bit of theory, थोड़ा सा theory. Supposing I give you that the height of tide at Tianjin is 2.606 meters on 11th April at 11:24 hours. Then what that means really is the tide follows this sine curve fashion where this is time and this is HOT. So if this is 00 hours, this is 06, this is 12 hours. The tide, which is 2.606 at 11 hours. So this is 11 hours, 11:24. If this is 2.606 meters, the height of tide, so then the height of tide is 2.606 at Tianjin at 11:24 hours. The reasons for this height of tide could be several. The reasons for why height of tide is 2.606 at Tianjin at a particular place. The reasons are approximately 166 in number. There are 166 reasons why the height of tide is so much at a particular place. Now, out of these 166 reasons or causes, four are major reasons or causes, and balance 162 are minor. These four major reasons are M2, S2, K1, and O1. The balance minor ones are neglected. They are not accounted for. They are neglected. But these four major ones are M2, S2, K1, and O1. And they are accounted for in the calculations. So, in the causes of tide, the causes of tide could be due to the positioning of the heavenly body, due to the positioning of the heavenly body with respect to the earth. That means we are talking about the sun and the moon with regards to the earth. And सर प्लीज थोड़ा रिपीट करना सर यहाँ से सर ये M2S2 के बाद सर रिपीट करेंगे. these are the four major reasons. The four major reasons are M2, S2, K1, and O1.
and 162 are minor reasons, and these minor reasons are neglected, they are not accounted for. तो इनको हटा दिया जाता है, कैलकुलेशन में नहीं लेते, लेकिन इनको लेते हैं हम. तो ये है क्या? The causes of the tide are essentially due to the amplitude of the heavenly body and the declination of the heavenly body. And which are the heavenly bodies that are in question? We are talking about the moon, and we are talking about the sun with respect to the earth. Similarly, for the declination of the heavenly body, again we are talking about the sun, and we are talking about the moon, the declination. The effect that the amplitude of the moon will have on the tide, on the earth, is what we are talking about. So ये एम्पलीट्यूड का मतलब एजीमुथ बोल रहे हैं? हाँ जी सर, एम्पलीट्यूड का मतलब एजीमुथ उसका मतलब amplitude of the moon. Yeah. The amplitude of the moon and the declination, the amplitude of the moon and the amplitude of the sun, the positioning of the sun and the positioning of the moon with respect to the earth. Altitude. Yeah. So, what is its amplitude and what is it's going to be the effect of that? Similarly, the declination of that. So, the effect due to the amplitude of the moon, that effect is called as M2. So 2 stands for semi-diurnal. That is twice daily. Twice daily. 1 stands for diurnal. That is once daily. So write down one line on M2. It is the lunar semi-diurnal. It is the lunar semi-diurnal amplitude based constituent. It is the lunar semi-diurnal amplitude based constituent. तो अब आते हैं S2 पे. It is the solar semi-diurnal amplitude based constituent. ओके अब आते हैं डेक्लिनेशन पे. किसकी डेक्लिनेशन ज्यादा है, सन की कि मून की? सन की ज्यादा है सर. अच्छा, लेट्स मी पुट इट द अदर वे अराउंड. किसकी डेक्लिनेशन का इफेक्ट साइड पे ज्यादा है?
सर मून का सर Moon- मून का मून सर, का मून का। सर मून का ज्यादा इफेक्ट है सर। मून का ज्यादा इफेक्ट It is near. मून It का is ज्यादा near. इफेक्ट इट्स नियर, इट्स क्लोज बाय. So therefore, the effect of moon's declination is going to be greater on the tide on the earth than the sun's declination. Everybody agrees on Yes this? sir. Okay. So the moon's declination effect being larger gets split into two halves. One half goes and merges with the sun's declination effect in totality, and one half of the moon, and that becomes what is called as K1. And the remaining one is called as O1. So let's write down K1 now. It is the lunisolar. It is the lunisolar diurnal declination based constituent. It is the lunisolar diurnal declination based constituent. ये तो इसकी कहानी हो गई. अब O1 पे आ जाते हैं. सर यूनिसोलर राइट? लूनी, लूनी, LUNI. LUNI. अब बचा O1. So it is the lunar declination based Sir, please repeat, sir. O1. It is the lunar diurnal declination based constituent. Okay, so let us stop here. सर एक मिनट व्हाइट बोर्ड दिखाना। हाँ जी. ओके सर। ठीक है. जैसा आपने डायग्राम बनाया है ऐसा डायग्राम बना सकते हैं सर एक्सप्लेनेशन के लिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पे. इस पे कोई क्वेश्चन ठीक है नहीं. सर। This is not for any question. This was only for the orals. Orals में कभी वो पूछते हैं what is M2S2, तो you should be able to answer it. ये उसके लिए था. 4 मेजर रीजंस हैं टाइड के लिए। So basically that this is because of the causes. One of the causes, the 4 constituents of a causes of a tide. So and उसके बाद में ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर देना. एम्पलीट्यूड, डिक्लिनेशन, ये वो, डायगोनल, सेमी डायगोनल, बस इतना ही. ठीक है सर. Okay, चलो, let us stop here, and I want you to also revise your second mates wala tide. Okay, your standard port and secondary port. I want you to go through. So what I'll be doing is I'll be posting the video links of Captain Vishnu Sharma. उन्होंने वो मरीन गुरुकुल में अपने वीडियोस डाले हुए हैं. Okay, so I'll post it in your group. You can just view it and revise your second mates का.
standard port and secondary port. Okay, will you do that? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. So please do a revision of your second mate's standard port and secondary port. Okay. ठीक है, sir. So because the next variation that I'll be doing will involve that. So the next variation with जो मैं करने वाला हूँ वो combination होगा. That is a combination of harmonic constant and your second mates also. Okay, sir. Okay. ठीक है. So I'll be posting the links in your group. You can just view it and so that you do a revision of that. Yes. Okay. Chalo. All right. See you then. Bye. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Bye.